अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अयि भो संस्कृतानुरागिणः समुपस्थिताः विद्वांसः, यथा भवन्तः जानन्ति यत् विश्वप्रतिनिधिभाषासु संस्कृतस्य वैभवम् इति विषयम् अवलम्ब्य आयोज्यमाने कार्यक्रमेऽस्मिन् भवतां हार्दं स्वागतं कुर्वन् सर्वेभ्यः सादरं प्रणमाञ्जलयः समर्पयन्ते। महतः प्रमोदस्य अवसरोऽयं वर्तते यत् अद्य वयं विश्वसंस्कृतसप्ताहपर्वणः चतुर्थदिवसे अन्तर्जालमाध्यमेन समवेताः स्मः। अतः कार्यक्रमस्य स्वस्त्यै मङ्गलम् अवश्यमेव आचरणीयम् इति अस्मदीयाः संस्कृतौ एका परम्परा वर्तते। तां परम्परां वयमपि अनुसरामः। तदर्थं लौकिकमङ्गलाचरणाय अहम् आकारयामि अस्मदीयः विश्वविद्यालयस्य पत्रकारिताविभागस्य नवोदितां वार्ताहारिकां सुश्री रजनीं यत् सा मङ्गलगानेन कार्यक्रमस्य अस्य मङ्गलम् आरम्भं करोतु इति। सुश्री रजनी। रजनी अस्ति अत्र? रजनी अनम्यूट करोतु। डिपिंची नमामि। रजनी भवती उपस्थिता अस्ति? हरि ओम्। इदानीम् आगच्छति गुरुजी ध्वनि? ध्वनि आगच्छति। वृन्दारण्यतपनतनया तीरवाणीरपुञ्जे गुञ्जनमञ्जुभ्रमरपटली काकली केली भाजी आभीराणा मधुरमुरली नाद सम्मोहितानाम् आभीराणा मधुरमुरली नाद सम्मोहितानाम् मध्ये क्रीडन्नवतु सततं नन्दगोपालबालः मध्ये क्रीडन्नवतु सततं नन्दगोपालबालः। धन्यवादः। धन्यवादः भवत्यै रजन्यै। मङ्गला एतद् मन्दाक्रान्ता छन्दसा भवती मङ्गलगानेन अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कृतवती। अतः परं पाणिनीयसंस्कृतवैदिकविश्वविद्यालयस्य
संस्कृत भारती महेन्द्रगढ़स्य अथ च जाह्नवीति संस्कृत शोधपत्रिकायाः संयुक्तत्वावधाने आयोज्यमाने अस्य कार्यक्रमस्य नेपथ्ये येषां महोदयानाम् अहर्निशं परिश्रमस्य योगदानं दृश्यते ते सन्ति अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकाः उत्सवपुरुषाश्च। श्रीमन्तः डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदयः एकस्य दिनस्य कार्यक्रमम् आयोजने महान्तः परिश्रमस्य आवश्यकता भवति, परं सप्ताहपर्यन्तं सञ्चालमानस्य कार्यक्रमस्य कृते कियन्ति परिश्रमाः अपेक्षन्ते इत्यस्य कल्पना कर्तुं शक्यते। अतः एतादृशाः सन्ति अस्माकं समन्वयकाः उत्साहिनः। अतः तान् अनुरुन्धे यत् ते उपस्थाय अद्यतनानां मुख्यातिथि आमन्त्रित विदुषाम् एकैकशः परिचयं प्रदाय अस्मान् अनुगृह्णन्तु। डॉक्टर विपिन झा महोदय अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकाः उत्सवपुरुषाश्च। धन्यवादाः महोदय। क्रमानुरूपं चतुर्थे दिवसे वयं प्राप्तवन्तः। भारतीय परंपरायां स्पष्टतया उल्लेखः दृश्यते, व्यवहारे दृश्यते यत् अतिथीनां महत्त्वं सर्वथा महनीयं भवति इति। कठोपनिषदि पश्यामः चेत् तत्र यदा नचिकेता प्राप्नोति यमगृहं तस्मिन् समये स न भवति। अनन्तरं यदा आगच्छति तो स कथयति तिस्रो रात्रिर्यदवासीत् गृहे मे अनस्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्मनस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। तो एकेन प्रसंगेन स्पष्ट रूपे द्रष्टुं शक्यते अतिथीनां महत्त्वं किं भवति। किन्तु अत्र जे उपस्थिताः सन्ति ते तु अस्मदीयाः एव भवन्ति, अभिभावकाः, मार्गदर्शकाः, अनुजाः, अग्रजाश्च एव सन्ति। किन्तु परम्परानुसारम् अत्र स्वागतीकर्तुम् अहम् अत्र उपस्थितोऽस्मि। तो अत्र सर्वादौ मुख्यातिथयः ये भवन्ति अस्मत् अग्रजाः डॉक्टर सुमन के.एस. महाभागाः। इमे लोयलास्थ महाविद्यालये संस्कृत विभागाध्यक्षाः भवन्ति। एतेषां प्रति अहं कार्तज्ञं बिभर्मि। एवमेव अत्र सारस्वतातिथिरूपे भवन्ति रामकृष्ण मिशन महाविद्यालयीय संस्कृत विभागाध्यक्षाः डॉक्टर प्रशांत कल्ले महाभागाः। एतेषाम् अहं सादरं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अत्र आमन्त्रित वक्तारूपे भवन्ति श्री संजीव ठाकुर महाभागाः, मनीष ठाकुर महाभागाः तथा ईश्वर प्रसाद महाभागाः। एतेषां कृते अपि स्वागतम् अत्र अहं व्याहरामि। अत्र गुरुजनाः अपि सन्ति, यथा अत्र प्रोफेसर रणवीर सिंह महाभागाः सन्ति। ह्यः एव कार्यक्रमः आसीत्, किन्तु इमे व्यस्ताः आसन् यात्रायाम्। एतस्मात् कारणात् तत्र वयं ह्यः एतेषां महानुभावानां दर्शनं न अधिगतवन्तः। अद्य इमे अस्माकं समक्षे अस्माकं पुरतः भवन्ति आशीर्वचनार्थम्। एवमेव अन्ये ये श्रोतारः भवन्ति, प्राणभूताः भवन्ति कार्यक्रमस्य। यतोहि श्रोतारः यदि न भवन्ति तर्हि कथं
यतोहि ये केचन आगच्छन्ति पश्यन्ति कियती संख्या वर्तते अत्र, तो श्रोतारः प्राणभूताः भवन्ति, अतः तेषां प्रति अहं स्वागतवचोभिः तेषां स्वागतं कुर्मः। अनेन सहैव ये केचन अत्र प्रत्यक्ष परोक्षरूपे सहायकाः भवन्ति तेषामपि स्वागतम् अस्ति। सर्वेषां स्वागतं, धन्यवादाः। मदन मोहन महाभागाः। सादरं धन्यवादाः समर्पयन्ति डॉक्टर बिपिन झा महोदयेभ्यः। अतः परं मन्ये साक्षात् एकस्मिन् कार्यक्रमस्य सञ्चालनम् अस्य कार्यक्रमस्य ये तिथयः सन्ति तैः एव एकस्य कार्यक्रमस्य सम्यक् सञ्चालनं विहितं। तस्मिन् दिवसे मन्ये अस्माभिः ज्ञातं यद् अद्यतन कार्यक्रमस्य ये मुख्यातिथयः सन्ति तेषु भाषासम्बद्धानि ज्ञानानि यानि सन्ति तानि तस्मिन्नेव दिवसे अस्माभिः दृष्टं श्रुतं च। अतः एतादृशानां महोदयानां इदानीं वयं व्याख्यानं शृणुमः। डॉक्टर सुमन के.एस. महोदयाः इमे लोयोला कॉलेज चेन्नई इत्यस्य स्थाने विभागाध्यक्षपदम् अलङ्कुर्माणः सन्ति। अथ च अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः सन्ति। अतः प्रप्रथमं वयं मुख्यातिथीनामेव उद्बोधनं व्याख्यानं शृणुमः। तदर्थं श्रीमन्तः भवतः आकारयामि यद् भवन्तः उपस्थाय स्वकीयेन व्याख्यानेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु। डॉक्टर सुमन के.एस. महोदयाः। नमामि, नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। व्यासायाप्रमितेतिहासरचनोल्लासाय दुर्वादिनां त्रासायासकराय सत्सुकृतविश्वासाय दोषद्विषे दासाय भयदाय मध्वगुरुहृद्वासाय तुभ्यं नमः। भासायामुनरम्यतोय सदृशायासाय मासेदिने। तत्र भवतः विदुषः सर्वान् रणवीर सिंह महोदयादि डॉक्टर प्रशांत कल्ले महाभागादि विविध विदुषः अहं सादरम् आदौ नमामि। एवमेव अन्येपि महान्तः विद्वांसः ये सन्ति तांश्च विदुषः स्वागतीकृत्य, यद्यपि तत्र भवान् बिपिन कुमार झा महोदयः मदनुज सदृशाः मां मुख्यातिथिरूपेण आहूतवन्तः। अनाहूतो अतिथि स्यादिति। यश्च आह्वानं विना आगच्छति सः अतिथिः, आह्वानं पुरस्कृत्य यश्च समागच्छति सः अभ्यागतः। मांश्च तत्र भवान् आहूतवान्, किन्तु तस्य आह्वानकारणात् नाहमत्र भवेयं, किन्तु प्रीत्या
संस्कृतप्रीत्या संस्कृतमतां च प्रीत्या अत्र महान् कार्यक्रमः प्रचलति, यत्र भागग्रहणमेव अभिमानास्पदम् इति मत्वा अहमत्र आगतवान् अस्मि। विशेषतः अहम् आलोचये यत् अहं तु जाह्नव्याः सारस्वतनिकेतनस्य तथा अन्येषां संस्कृतभारती कार्यक्रमाणां, यतोहि अहं तु संस्कृतभारत्या सह सामान्यतः 93-19 1993 तः संस्कृतभारत्या सह तत्र भवता अग्रजेन सत्यनारायण महाभागेन, विश्वास महाभागेन, एवं जनार्दन हेगड़े महोदयेन सह इत्यादीनां मन्मित्रैः सह विविधेषु संस्कृतकार्यक्रमेषु भागं स्वीकुर्वन् एतावत् पर्यन्तं यत्किञ्चिदेव संस्कृतभारत्यै संस्कृतमात्रे दातुमहं शक्तोऽस्मि। अतः प्रतिदिनं यदि संस्कृतस्य छाया विविधभाषासु या वर्तते तां छायां स्वीकृत्य अस्माभिः सर्वैरपि सुरसावत् भवितव्यम् इति। यथा रामायणकाले समुद्रलङ्घनसन्दर्भे रामायणकाले सुन्दरकाण्डे हनुमान् यदा समुद्रोल्लङ्घनं करोति, भोजराजस्तु बहु विस्तरेण विशेषरूपेण हनुमतः समुद्रोल्लङ्घनं वर्णयति। तत्र च हनुमतः समुद्रोल्लङ्घनकाले या तत्र भवति असुरा महिला, सा स्वछाया मध्ये यः कोऽप्यागच्छति तं स्वीकृत्य स्वमुखे निक्षिप्य तं खादति स्म। एवं च वयं तु संस्कृतप्रसारणे सा असुरा इव भवितव्या, न तु असुरत्वं स्वीकृत्य। अर्थात् ये केऽपि संस्कृतविषये किमपि सम्भाषन्ते तान् तूर्णमेव अन्तर्णीय तैः सह इतोप्यतिशयेन तास्वपि भाषासु, यासु भाषासु ते जनाः प्रतिदिनं सम्भाषयन्ति, ताः भाषाः स्वीकृत्य तासु भाषासु संस्कृतस्य छाया यथा वर्तते तदेव मुख्यरूपेण स्वीकृत्य इतोप्यभिवर्धनं संस्कृतस्य दायित्वं कथं वर्तते तासु भाषासु इत्यादि मननं कुर्वन्तः वयं तान् प्रत्यपि जनान् उद्दिश्य संस्कृतस्य महत्त्वं, संस्कृतस्य अपौरुषेयत्वं, संस्कृतस्य अनादित्वं, संस्कृतं न केवलं गीर्वाग्वाणी सरस्वती इतिवत् केवलं देवतानां कृते वर्तते, देवताभिः तत्र प्रारब्धा इयं भाषा विशेषतः मनुकुलस्य प्रगत्यै यथा वर्तते तथा अस्माभिः तत्र तत्संस्थापने प्रयत्नः करणीयः। एवञ्च अस्मच्छायायां ये केऽपि जनाः समागच्छन्ति तान् तूर्णमेव अन्तर्णीय अस्माभिः संस्कृत रसिकान् तान् यथा कर्तुं यादृशः प्रयत्नः विधेयः तावान् प्रयत्नः अवश्यं विधेयः। तदैव संस्कृतस्य अभिवृद्धिर्भवति। न केवलं संस्कृतं संस्कृतं संस्कृतम् इति प्रतिदिनं संस्कृत शब्दस्य जपकरणेन, किन्तु यथा अन्येऽपि जनाः अन्यभाषाजनाः अर्थात् विविधराज्येषु विविधदेशेषु ये केऽपि जनाः सन्ति, यथा मया इदानीम् अद्य तु न केवलं प्रान्तीयभाषाणां किन्तु विदेशीयभाषाणाम् उपर्यपि संस्कृतस्य छाया यथा वर्तते इति अत्र चर्चा क्रियमाणा वर्तते खलु। अतः सामान्यतः इदानीं संस्कृतस्य छाया आङ्ग्लभाषायां यथा वर्तते, यथा इदानीं संस्कृते सूनु इति शब्दः वर्तते, सूनु शब्दस्य तत्र रूपान्तरमेव वर्तते सन् इति। एवमेव
माता शब्दस्य पूर्वं डिक्शनरी मध्ये भवन्तः पश्यन्तु मेटर् इति शब्दः आङ्ग्लभाषायां मेटर् इति आसीत्, अनन्तरमेव मदर् इति शब्दः समागतः। एवञ्च मातातः मेटर्, मेटर्तः मदर्, कथमयं व्यत्यासः, कथमयं एतद् रूपान्तरं सञ्जातम् इत्यादि विषये तानपि प्रेरयित्वा पश्यतु नाम संस्कृतस्य दायित्वं कथमस्ति। वयम् इतोप्यतिशयेन फिनेटिक्स् अर्थात् फिनेटिक्स् वा लिङ्ग्विस्टिक्स् वा भाषा विषये वा इत्यादि इतोप्यतिशयेन यदि वयं ज्ञातुम् इच्छामः, इतोपि अतिशयेन अध्ययनं कुर्मः, तदा अवश्यमेव वयं ज्ञातुं पारयेम यत् संस्कृतस्य छाया न केवलम् अस्मदीय प्रान्तीय भाषासु किन्तु विदेशीय भाषास्वपि वर्तते इति, भाषाणाम् उपर्यपि वर्तते इति। एवञ्च वस्तुतस्तु नाहमद्र अद्य संस्कृतस्य छाया प्रान्तीय विदेशीय भाषाणाम् उपरि यथा वर्तते इति विषये भाषणं कर्तुम् आगतः, किन्तु केवलं ये तत्र महान्तः सज्जनाः महात्मानः विद्वांसः तत्र प्रशान्त कळ्ळे महाभागाः तथा अद्य ये तत्र संस्कृत विभागस्य अध्यक्षाः आसन् हरियाणा मध्ये, ते तत्र रणवीरसिंह महोदयाः, एते अनेके विद्वांसः समागताः। तेषां कृते विशेषरूपेण अहं स्वागतं व्याहृत्य संस्कृतस्य छाया इदानीं काचन चर्चा वर्तते सर्वत्र यत् तमिळु भाषा प्राचीनतमा भाषा, किन्तु संस्कृत भाषा यादृशी प्राचीनतमा, तमप् शब्दः सुपर्लेटिव् मध्ये उपयुज्यते, एकस्यैव उपयोक्तुं शक्यते, एकस्याः भाषायाः, न तु बहूनां भाषाणां कृते। तर्हि तमप्रत्ययः न भवति, तरप्रत्ययो वा अथवा प्राचीनम् इत्येव वक्तुं शक्यते। किन्तु प्राचीनतमा भाषा नाम संस्कृतमेव, यतोहि वेदेष्वेव वर्तते। अनादिवेदकालादपि संस्कृतभाषया एव सर्वेपि तत्र स्वकम्युनिकेशन् अथवा व्यवहारं कुर्वन्तः आसन्। किन्तु 2000 वर्षेभ्यः पूर्वं वा 300 वर्षेभ्यः पूर्वं वा द्रविडभाषासु अर्थात् संस्कृतेतरभाषासु तमिळुभाषा नूनं तत्र प्राचीनतमा भाषा। संस्कृतं विहाय संस्कृतं तु अनादिभाषा वर्तते। संस्कृतं न केवलम् अनादिभाषा किन्तु सिस्टमैटिक् भाषा यथा उच्यते। अत एव कंप्यूटर मध्ये वयम् एतत् संस्थाप्य इतोपि तत्र आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स इत्यादि विषयेषु विशेषाभिवृद्धिं, विशेषतया ज्ञानस्य अभिवृद्धिः यथा स्यात् तथा कर्तुं वयं शक्नुमः। एवञ्च अत एव मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति यत् यश्च वेदमन्त्रो वर्तते, मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति वेदमन्त्रे वर्तते। संस्कृतमेव नित्यं किन्तु नवीनं, नित्यं चेदपि नवीनं तत्र संस्कृतमेव। अन्याः भाषाश्च प्राकृतभाषाः, न तु संस्कृतभाषाः। भाषायां द्वैविध्यमेव वर्तते, यत् संस्कृतं प्राकृतम् इति। प्रकृतिसहजतया ये तत्र मानवाः यां भाषाम् उपयुज्य अनन्तरम् अन्येभ्यः अपि तत्र प्रसारितवन्तः, अन्येभ्यः कृते दत्तवन्तः, ताः भाषाः प्राकृतभाषाः। संस्कृतभाषाः नाम सम्यक् कृतमेव, यत् पूर्वमेव आसीत् तां भाषां स्वीकृत्य योग्यरूपेण वयम् अस्मदीय अंडर्स्टैंडिंग अथवा अस्मदीय ज्ञानानुसारेण, विवेकानुसारेण यत्र संबद्धं कृत्वा व्याकरणादिकं विरचय्य, इदानीं पश्यतु अन्यासु भाषासु व्याकरणं दृष्ट्वा भाषा प्रयोगः, संस्कृते तथा न। भाषां दृष्ट्वा पाणिनिर्वा भवतु अथवा अन्यः यः कोऽपि वा महर्षिर्भवतु, सः अनन्तरमेव पाणिनिः, काशकृष्णः, आपिशलः इत्यादि व्याकरण ग्रन्थाः भाषां दृष्ट्वा विरचिताः। किन्तु अन्यासु भाषासु व्याकरणं दृष्ट्वा अनन्तरं वयं तत्र पाठयेम। संस्कृते तथा नास्ति। एवञ्च यतोहि संस्कृतं सम्यक् कृतमेव, सम्यक् कृतं नाम सम्यक् लग्नमेव। वी हैव जस्ट पुट टुगेदर संस्कृत भाषा विविध व्यवहारं स्वीकृत्य
वेदव्यवहार वैदिकव्यवहारं लौकिकव्यवहारम् इत्यादं समीचीनतया तत्र वयम् अनलैस् कृत्वा परिशील्य अनन्तरं तदनुगुणमेव व्याकरणं तत्र विरचितं पाणिनिना वा आपिशलेन वा येन केनापि। अतः व्याकरणशास्त्रे दोषः भवेत् न तु संस्कृते। किन्तु अन्यासु भाषासु तथा न, व्याकरणं यथा लिखितं तदृश्यैव वयमपि तत्र एवं व्याख्यानं कर्तुम् अथवा व्यवहारं कर्तुं प्रयतेम खलु। एग्जाम्पल् उदाहरणार्थम् इदानीम् अहम् एकं प्रश्नं पृच्छामि आङ्ग्लभाषा, एग्जाम्पल् एव केवलम् उदाहरणार्थम्। आङ्ग्लभाषायां मदर् इति शब्दः अस्ति, मदर् इति शब्दः अस्ति। या महिला, या स्त्री अस्मान् जनयति अथवा अस्माकं कृते या स्त्री जन्म दत्तवती तां स्त्रियमुद्दिश्य वयं माता इति कथयामः। माता शब्देन तां महिलां वयम् आह्वयामः। किमर्थं मदर् इत्येव, किमर्थं न फादर् इति? यदि अस्माभिः प्रश्नः तत्र उद्घाटितो भवेत्, उत्थितो भवेत्, तस्य प्रश्नस्य उत्तरमेव नास्ति, अरे अयं मूर्खः प्रश्नः। डिक्शनरी मध्येपि सा या तत्र जन्म दत्तवती अस्माकं कृते तां माता मदर् इत्येव वयं वदामः, न तु फादर् इति। अयं मूर्खः प्रश्नः इति। यस्य प्रश्नस्य उत्तरं नास्ति, उत्तरं वक्तुं वयं न पारयेम, तदा प्रश्न एव अनुचितः इति कथयेम। सामान्यः अभ्यासः अस्माकं मनुष्याणां जनानां। किन्तु स एव प्रश्नः यदि संस्कृतशब्दान् उद्दिश्य भवन्तः मां पृच्छन्तु, किमर्थं माता इत्येव तस्यै वयं शब्दम् उपयुञ्ज्मः, किमर्थं वा पिता इति यदि प्रश्नः तत्र उत्थापितः, तस्य उत्तरमस्ति माङ् माने इति धातोः उत्पन्नशब्दः माता। मानं नाम honor. The most honorable person in one's family can always be mother, mother and only mother, nobody else. सर्वदा मानार्थं, अतिशयमानार्थं या योग्या सा माता एव, न तु पिता। पिता तु अनन्तरमेव आगच्छति। अतः सर्वदा द मोस्ट ऑनरेबल पर्सन, यदि भवन्तः स्वपितरमेव अत्यन्तं माननीयं मन्यन्ते तर्हि तमपि माता इति शब्देन तत्र आह्वयन्तु, चिन्ता नास्ति। यतोहि वयं नारायणं भगवन्तं तत्र आह्वयामः खलु, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कृष्णः माता वा, कृष्णः पिता वा? सर्वं स एव, त्वमेव माता च। माननात्, मानदानात् सह माता, पालनात् सह पिता। एवञ्च अर्थमुद्दिश्य वयं तत्र शब्दप्रयोगं कुर्मः संस्कृते, किन्तु अन्यासु भाषासु तथा नास्ति एव। यः कोऽपि उपयुक्तवान् अहमपि उपयुञ्ज्मि। एवञ्च यस्य कस्यापि शब्दस्य उपयोगे अथवा अभ्यासे लाजिक् एव नास्ति, अथवा स्यात् किन्तु वयं न जानीमः। तथा तादृशी व्यवस्था इदानीम् अन्यासु भाषासु वर्तते, किन्तु अस्माकं कृते तथा न। पुत्रः इति तस्य सुतस्य किमर्थं पुत्र एव उपयुज्यते? किमर्थं वा अन्यं कमपि शब्दं वयम् उपयुञ्ज्मः इति चेत्, पुन्नाम्नः नरकात् त्रायते इति पुत्रः अथवा पुत्री। पुत् इति नरके पितरः पतन्ति यदि अन्त्यसंस्कारादिकं पुत्रेण पुत्र्या वा न क्रियते चेत्। एवञ्च यः पुत् नाम नरकात् पितरं त्रायते सः पुत्रः अथवा सा पुत्री। एवञ्च सर्वशब्दः अपि तत्र अर्थवत् शब्दाः एव वयम् उपयुञ्ज्मः, न तु केवलं यथा कथञ्चित्, यथा आङ्ग्लभाषायां कस्याश्चन स्त्रियाः कृते माता मदर् इति, अथवा कस्यापि पुरुषस्य कृते पिता इति, फादर् इति, अथवा सन् इति। सन् कथम् आगतं? किमर्थं सन् इत्येव? किमर्थं वा नान्यशब्दः? नास्ति एव उत्तरम्। एवञ्च तत्र संस्कृतस्य छाया वर्तते। यदि अन्यस्याः भाषायाः सकाशात् यं कमपि वयं शब्दं स्वीकृत्य उपयोगं कुर्मः, उपयोगे वयं नितरां तत्र आनयामः, तदा तस्य स्रोतः यदि न विज्ञास्यामः
महोदय अन्म्यूट् करोतु। नाहं वदामि आङ्ग्लभाषायां ये केचन शब्दाः वर्तन्ते ते सर्वेपि संस्कृत यः कोऽपि मम मैक्रोफोन् आफ् कुर्वन्नेव वर्तते। विपिन् झा महोदय कृपया पश्यतु। एवञ्च आङ्ग्लभाषायां वा अन्यस्यां कस्याञ्चन भाषायां वा ये केचन शब्दाः वर्तन्ते ते सर्वेपि संस्कृतस्य छायारूपेण वर्तन्ते इति नाहं कथयेयम्, किन्तु केचन शब्दाः संस्कृतादपि तत्र स्वीकृताः वर्तन्ते। तान् शब्दान् वयं रेकग्नैस् कृत्वा अर्थात् तान् शब्दान् परिशील्य यथा संस्कृतस्य छाया तत्रापि वर्तते एवमेव अन्यास्वपि विदेशीय भाषासु तादृशी छाया वर्तते। तत् स्वीकृत्य संस्कृतस्य अनादितां, संस्कृतस्य प्राचीनतां, संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं, संस्कृतस्य दायित्वं, संस्कृतस्य मातृस्थानीयतां वयं सर्वेपि तत्र अङ्गीकृत्य संस्कृतमातरं प्रति यत् गौरवम् अस्माभिः दातव्यं तत् यदि वयं भारतीयाः भूत्वा यदि दास्यामः तर्हि नूनम् अस्य देशस्य स्वर्णमहोत्सवः यः आचर्यमाणो वर्तते सः नितरां सफलो भवेत्। संस्कृतमातरं प्रति वयं गौरवमपि, यतोहि मातरं प्रति यदि वयं मातृस्थानं न दास्येम तद् अन्यायं खलु। यस्य कस्यापि मातरं प्रति या माता बहून् पुत्रान् सूते पुत्र्यश्च तां प्रति भवती माता एव न इति कथयेम, तदा कथं वा भवेत् तस्याः मातुः मनसि इति किञ्चित् आलोचयेम। एवञ्च मातृस्थानीयां संस्कृतभाषां सर्वदापि समस्तप्रपञ्चस्य मातृत्वेन परिगणयन्तः, तस्याश्च भाषायाः छाया विविधभाषासु विविधस्तरेषु कासुचित् भाषासु बहुप्रतिशतं स्यात्, कासुचित् भाषासु किञ्चिदेव स्यात्, यत्किमपि भवतु, किन्तु संस्कृतस्य छाया तु वर्तते एव खलु। तदङ्गीकृत्य संस्कृतमातरं वयं सर्वेपि नुमः। वयं सर्वेपि संस्कृतमातरं पुरस्कृत्य अन्याः भाषाः अपि गौरवरूपेण पश्येम। यदि सा माता चेत् तस्याः पुत्र्यः खलु अन्याः भाषाः। मातरं प्रति गौरवं यदि दीयते चेत् पुत्र्याः कृते तत्र किम् अवमाननं स्यात् वा? न कदापि भवेत्। अतः एवञ्च संस्कृतस्य गरिमाणं यः कोऽपि कथयति चेत् अन्यस्याः भाषायाः तत्र अधःपतनं न तत् कुर्यात्, न स करोति, किन्तु संस्कृतमातरं प्रति गौरवं यत् प्राकृतं गौरवं, यत् सहजं गौरवं वर्तते तत् ददन् वर्तते खलु। न तेन कोऽपि दोषः कृतः इति उक्त्वा तत्र अस्मन् मित्रवर्यः डॉक्टर प्रशांत कल्ले महाभागाः ये तत्र संस्कृतविभागस्य विवेकानंद महाविद्यालये 25 वर्षेभ्योऽपि तत्र सहस्राधिक छात्रान् तत्र निर्माणं कुर्वन् वर्तते अस्मन् मित्रवर्यः डॉक्टर प्रशांत कल्ले महाभागः। तं महोदयं प्रति अहं सादरं नमस्कारान् समर्प्य तञ्च पौनःपुन्येन तत्र स्वागतीकर्तुम् इच्छामि। विरमामि च एतेभ्यः सामान्य वचनेभ्यः, यतोहि अन्ये विद्वांसः सन्ति, ते इतोपि विशेषतया संस्कृतस्य विषये, संस्कृतस्य सम्बन्धविषये विविध भाषाभ्यः, विविध भाषाणां तथा संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं सम्बन्धः कथं वर्तते इति वक्तुं ते एव विद्वांसः पण्डिताः समर्थाः वक्तुम् इत्युक्त्वा विरमामि। पौनःपुन्येन सर्वान् गुरुजनान्, अत्रत्यान्
महतः विदुषः नमामि नमामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जियात् गीर्वाण भारती। जी धन्यवादाः महोदयाः। यथा मया दृश्यते यत् भवतः तिवारी महोदयः न श्रूयते। भवतः उद्बोधनात् पूर्वं ध्वनि आयाति। हरि ओम्, ध्वनि श्रूयते? श्रूयते श्रूयते। अत्र दृश्यते श्रोतॄणां संख्या मन्ये भवतः उद्बोधनात् पूर्वं 25 एव आसीत्, परं भवतः उद्बोधनस्य प्रभावः तावत् दृश्यते इदानीं संख्या मन्ये 30 संख्या वर्धिता। तो भवताम् उद्बोधनस्य प्रभावः साक्षात् एव अस्माभिः दृष्टः। यतोहि उक्तं खलु संस्कृतं संस्कृतेर्मूलं ज्ञानविज्ञानवारिधिः वेदतत्त्वार्थसंजुष्टं लोकालोककरं शिवं लोकालोककरं शिवं। मन्ये भवतां व्याख्याने एतद् अनुभूतं यद् शास्त्रस्य निर्माणं लोकं दृष्ट्वा एव शास्त्रस्य रचना जाता इति कथयामश्चेत् अत्र मन्ये काचिदपि विप्रतिपत्तिः नास्ति। यतोहि एकम् उदाहरणं वदामि। सिंहः इति शब्दस्य निर्माणं कथं भवति? सिंह इत्यस्य यदि शब्दस्य व्यावर्तनं कुर्मः, तो यः हिंसा करोति, सिंहः अस्ति, ह पूर्वम् आनयामः, अनन्तरम् इकारः तत्र योजयामः, चेत् हिंसा यः करोति सः एव सिंहः। अतः लोकं दृष्ट्वा शास्त्रस्य प्रवृत्ति भवति इति कथने कापि विप्रतिपत्ति कापि समस्या नास्ति इति वयं ज्ञातवन्तः भवताम् उद्बोधनेन। अतः मन्ये महत्वपूर्णं व्याख्यानम् उद्बोधनं च आसीत्। भवतां हार्दं स्वागतं करोमि। अतः परम् अस्य अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य ये सारस्वत अतिथयः सन्ति तेषां व्याख्यानं वयं शृणुमः। सारस्वतरूपेण येषां वरेण्यविदुषां ज्ञानवृद्धेन सहितम् अनुभवशीलानां डॉक्टर प्रशांत कलय महोदयानाम् इदानीं वयं व्याख्यानं शृणुमः। इमे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद महाविद्यालयस्य मलयापुर स्थानीय विभागाध्यक्षपदम् अलङ्कुर्माणः सन्ति। मन्ये अहम् एतेषां विषये बहु अधिकं न जानामि, परं मुख्यातिथिभिः यद् ज्ञापितं तेन अनुभूयते, ज्ञायते यद् एतेषां सान्निध्यम् अस्माकं कृते मन्ये ज्ञानवर्धन सम्बन्धः ज्ञानवर्धकं भविष्यति एतेषां सान्निध्यम्। अतः बहु अधिकं समयं अस्वीकुर्वन् साक्षात् अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य सारस्वत अतिथीन् आकारयामि यत् ते आगत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु, अस्माकं मार्ग प्रशस्तीकुर्वन्तु। आदरणीयाः सारस्वत अतिथयः डॉक्टर प्रशांत कलय महोदयाः। Good evening to everybody. Namaste, sir. My topic today is influence of Sanskrit over Telugu and Tamil language. As rightly pointed out by Professor Suman Ji, who happens to be my very good friend and who heads the Department of Sanskrit in Laila College. So I have been teaching in Vivekananda College since 1988.
And in 2019, I became the head of the department. This subject is comparative philology. Therefore, I would like to speak in Sanskrit, and English as well. I'll be using Telugu and Tamil also. And the time given to me is about just 15 minutes. I'm sure I would keep up the time. See, first of all, Sanskrit belongs to Aryan group from the Indo-European family. It's a very large family. In that family, Sanskrit belongs to Aryan group, the first group, otherwise called as Indo-Iranian family. Whereas Telugu and Tamil both belong to Dravidian family, as pointed out by Sumanji. So how can there be big relationship? Not much. Among the languages of Indo-European family, there is big relationship and similarities when it comes to prefix, suffix, formative elements, all these things. Verbal endings, case endings, etc. Prathama, Dvitiya, Tritiya, Vibhakti endings, all these things, they go together. Whereas between two families, if you take Indo-European family and Dravidian family, the relationship is not that much, but definitely the influence of Sanskrit is seen on both Telugu and Tamil when it comes to syntax, morphology, and even semantics. Semantics means the branch of linguistics that deals with meanings. So this is the first point which I would like to say. And Sanskrit is Sanskritam is inflectional language. What is inflectional language? That means the root or the stem will remain without, it would undergo a lot of changes. Root, you mean the root. For example, asti, staha, santi. As is the root. But where is that as in dual and plural? Staha, santi. That as is missing. A is missing. Staha. It should have been asti, astaha, santi, which is absolutely, we don't accept. But asti, staha, santi. That means the root itself has undergone a lot of change. At times it becomes unrecognizable. And of course, all inflectional languages undergo a lot of changes in their forms. For example, prefix, suffix. So root or stem, if it stands in the middle, prefix is upasarga here and suffix is that side. And P stands for prefix, M stands for modification of the prefix, R stands for root, X stands for change in the root, S stands for suffix, and N stands for change or modification of the suffix. Then the formula would be P power M, R power S, S power M. I repeat, P power M, R power X, S power N. All the things will undergo change. The prefix will undergo change, root will undergo change, or the stem will undergo change, the pratipadika, and also the suffix will undergo change. Let us see one example. In Tamil and Telugu. In Tamil and Telugu, both are not inflectional languages. Let us see. Both are agglutinating languages. What do you mean by agglutinating language? Agglutinating means the prefix and suffix get glued, get attached to the root. The root will not undergo any change. The stem will not undergo any change. Whereas in Sanskrit, stem and root will undergo change, I told you. And all Indo-European languages, the root and stem will undergo change. Whereas in Dravidian language, the stem will remain as it is. It won't undergo any change. I will give you an example. Let us take Tamil. But prefix and suffix will be there. They will come and join with the stem. They will undergo changes, but the stem will remain the same. Pratipadika or the root dhatu will remain the same, no change. Let us see one example. There is a word in Telugu and Tamil, palam. In Tamil, palan. Telugu, palamu. Palamu means fruit. That's the first meaning. Second meaning is result. Karmanye vadikaraste ma phaleshu kadachana. As the Gita says, that phala. Phalam means here, not the fruit, the result. So let us take phalam to mean result here. In Telugu, a phalamu nandu. A phalamu nandu. A is prefix, phalamu is stem, nandu is locative, saptami, ekavachanam. In that result, that is the meaning. A phalamu nandu. E phalamu lona, e phalamu valana, etc. So phalamu remains. It does not undergo any change. But a, e, a, etc. These demonstrative
prefixes, they undergo change. But remember, in agglutinating languages, the stem remains the same without any change. Same thing with Tamil also. I will take the same example. Palamu becomes Palan in Tamil. Palan means again result. Appalanukaga, Ippalanai. I is the suffix that would mean the accusative case ending. Dvitiya vibhaktya. Dvitiya vibhakti case ending. Object, karma. Then Appalanodu. Appalanudaya. Udaya means in Tamil sixth case ending. That is Shashti. So Shashti singular. Appalanudaya. Udaya means the suffix meaning the sixth case ending. So now you can see again palan remain the same. Only the prefix and suffix are undergoing change. Whereas in Sanskrit, German, English, Gothic, Anglo-Saxon, French, Latin, etc., roots also will undergo change. Stems also will undergo change because they are all inflection languages. All Indo-European family, the languages belonging to Indo-European family are all inflection languages. Whereas Dravidian family has agglutinating languages. Telugu and Tamil both are agglutinating languages. Okay, and then you can see Dravidian languages cannot be totally exclusive. They have certainly borrowed from Sanskrit, no doubt. They have definitely borrowed words and meanings from Sanskrit all through their stages of development. As Sumanji said rightly, he was pointing out Sunu. So Sunu is a kind of phonetic change. So if I remember right, it is called apakope. So which means the antya apachaya. Adi apachaya, madhya apachaya, antya apachaya. Antya apachaya means the vowel at the end will disappear. Sunu, who is the vowel? That disappears in English. It becomes sun. Sannu, no, sun. So that who has disappeared. It's called antya apachaya. And mind you, both English and the Sanskrit belong to Indo-European family. They are not agglutinating. That's why I told you lot of changes. My dear members here, there are more than 60 members. I really congratulate our Bipinji for bringing so many members here. Wonderful. And you can just see the influence and also how that last vowel has disappeared. Sannu, Sunu, San. So like this, there are many phonetic changes and all Indo-European languages, they undergo similar kind of changes. Okay. Now coming back to Tamil and Telugu, even in syntax, what is syntax? Syntax is the manner in which words are arranged in a sentence. That's all. That is syntax. Even when it comes to syntactical construction, Telugu and Tamil have followed Sanskrit. We can prove that. Okay. I've just got 6 more minutes to do. I'll do it. So let me take an example. Aham adhuna devalayam gacchami. Aham adhuna devalayam gacchami. Vartamane lat. Aham adhuna devalayam gacchami. Gacchami aham adhuna devalayam. Devalayam aham gacchami adhuna. Devalayam gacchami adhuna aham. Every construction is true. This is the beauty of Indo-European languages, some of them, not all of them. In English, it cannot be true. Though English belongs to Indo-European family, you can't, for example, let me translate this. Now I go to temple. Aham adhuna devalayam gacchami. Now I go to temple. To temple I go now. Okay. To temple go I now. Miserable. Then temple to I go. So it is not coming out properly. Whereas in Sanskrit, it beautifully comes. Any way you place the words, syntactically the meaning will come. This is true for Telugu and Tamil also. Let me translate the same sentence in Telugu and Tamil. Aham adhuna devalayam gacchami. Nenu ippudu gudiki velutunnanu. I hope there are 1 or 2 Telugus here, though it is Haryana holding it. So, nenu ippudu gudiki velutunnanu. Velutunnanu nenu ippudu gudiki. Velutunnanu ippudu gudiki nenu. All are correct. Tamil also. நான் இப்போது கோவிலுக்கு செல்கிறேன். செல்கிறேன் நான் இப்பொழுது கோவிலுக்கு. செல்கிறேன் கோவிலுக்கு இப்பொழுது நான். See, syntactically, Telugu and Tamil
certainly have followed Sanskrit when it comes to syntax. So just to all our scholars here, there are 4 branches of linguistics or comparative philology: phonology, morphology, syntax, and semantics. Phonology deals with sounds. First, dhvani is important, sound. So sounds form word, morphology, word formation. Then syntax, how the words are arranged in a sentence. Then finally meaning, semantics. Without meaning, how can we? So meaning is different, word is different. Even Shabda Kalpadruma, we have to refer, and you know the meanings only from the words. So every word has got different meaning. The beauty of Sanskrit is that particular word may have so many meanings. Hari, our Sumanji will give so many meanings for Hari. Harihi, Kapi, horse, Lord Vishnu, Indra, so many meanings. So which, according to context, we take it. Telugu is also like that. Then finally, the last 3 minutes, Telugu has tatsama words, certainly borrowed from Sanskrit, but adapted so well that they would look like Telugu words, but they are not Telugu words. I will give you one example. Manchamu. Manchamu in Telugu means cot. Manchaha. See? So, but it appears that Manchamu is a Telugu word, but Manchamu is not Telugu word. So it has borrowed. So scholars will agree certainly that certain words are certainly, no doubt, they are borrowed from Sanskrit. And not only that, we can see that most part of Telugu and Tamil grammar also are adapted from Sanskrit. Some grammar portions. I'll give you only one example and close down my short lecture. In Telugu grammar, we have Kartari Prayoga and Karmani Prayoga. So let me tell you Kartari Prayoga. Ramudu Ravanuni Hatamarchanu. Ramudu Ravanuni Hatamarchanu. Ramaha Ravanam Hanti. Ramaha Ravanam Hanti. See, and the Kartari Prayoga is absolutely tallying here. But if you take Karmani Prayoga, the passive, I'm not going to take Hataha, because Hataha is Tapratya. Tapratya, you will have to add an auxiliary verb there. Hataha asti, hataha asit. You can't simply say Ravanaha Ramena hataha. Wrong. Ravanaha Ramena hataha asti, hataha asit. Otherwise, hataha is a visheshana. Mere hataha, tapratya is a visheshana. So, bearing that in mind, if you would say in Tamil, in Telugu, beg your pardon, Karmani Prayoga, Ravanaha Ramena Ahanyat, Ravanudu Ramuni Cheta Champabadenu. Ravanudu Ramuni Cheta Champabadenu. English, simple, I'll tell you. Ravana was killed by Rama. So, here again, the syntactical construction as well as the grammatical peculiarity all appear to be the same, and which shows again to prove that Telugu and Tamil have also followed what is called Sanskrit grammar. That is, Chinnaya Suri is the father of Telugu grammar, and Chinnaya Suri must have followed Panini. My dear members, I may be wrong if I would say that among all the Dravidian languages, as Sumanji said, Tamil is the oldest. Which one is older, Tamil or Sanskrit? Cannot be a successful platform at all. Both are equally old. Whereas Telugu is not that old. Telugu 9th century developed completely. Please pardon me if I am wrong. Because Nannaya, Tikkan and Erra Pragada, they have transcreated Mahabharata. That happened in 9th century. Then Kannada, then Malayalam. So Ezhuthachan transcreated the epic. So that is 11th century. So which means that gradual development of other 3 languages, namely Telugu, Kannada and Malayalam, took place after the development of Tamil. And Tamil certainly goes along with Sanskrit, no doubt about it. When it comes to their age, we cannot determine the age of both the languages. And so this is the thing. So in my short lecture, time given to me by our Bipinji is very short, but then I'm happy. So this is how we can safely say that Sanskrit has its influence on Dravidian languages.
and certainly on foreign languages, no doubt. But what is given to me is Telugu and Tamil. Namaskaram. धन्यवादाः महोदयाः। भवतां वैदुष्यपूर्णं व्याख्यानं श्रुत्वा मन्ये सर्वेपि श्रोतारः लाभान्विताः सन्ति। वयं लिङ्ग्विस्टिक् मध्ये वयं द्रविडभाषापरिवार पुनश्च भारतीयभाषापरिवारसन्दर्भे यदि पश्यामश्चेत् द्रविडभाषापरिवारे ये प्रमुखाः भाषाः सन्ति तेषु तमिल्, तेलुगु, कन्नड, मलयालम् इमाः भाषाः प्रमुखत्वेन द्रविडभाषापरिवारे प्राप्यन्ते। भारतीयभाषापरिवारे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन फ्रांसीसी अवेस्ता भाषापि मन्ये भारतीयभाषापरिवारे एव प्राप्यते। तो तत्र एवमपि अस्माभिः श्रूयते यद् संस्कृतभाषा भारतीयभाषाणां सर्वदा पोषिका, संरक्षिका, संवर्धिका रूपेण भवति। यदि कुत्रचित् कस्याश्चित् भाषायां शब्दनिर्माणं करणीयं चेत् संस्कृतस्य सहायेन एव शब्दनिर्माणं कर्तुं शक्यते। तर्हि एतादृशाः विषयाः भवद्भिः उपस्थापिता। भवद्भ्यः पुनः पुण्येन धन्यवादाः समर्पयन्ते। अतः परं sorry for disturbing in between. श्रूयते वा? श्रूयते महोदय। Tatra. Actually, it's a great honor to listen to Dr. Prashant Kale. I have experienced it in various platforms, and today it was totally different. Every time when we listen to Dr. Prashant Kale, I think it is not the right way of giving 15-20 minutes to Dr. Prashant Kale. I assure to the present the august audience here that one exclusive session from Janhavi Saraswata Niketana we will have of Dr. Prashant Kale. He is such an erudite scholar that we at least need to listen to him for 2 hours. So, like, actually, Kalle is the word which we say in Kannada, Telugu, and all is there. That is peanuts. So, like, in cinema hall, if you sit and keep on having some peanuts, you will not even come to know how much of peanuts you had. So, I think Prashant Kale, his, words, if we keep on listening to his speech, it is so, great that we need to keep on listening to more hours. I'm extremely sorry for giving very less time for Dr. Prashant Kale, but I assure that we would like to listen to you for more and more in future. Thank you very much, Dr. Prashant Kale ji. अतः परं कार्यक्रमम् अग्रे सारयन् डॉक्टर ईश्वर प्रसाद महोदयं सादरं प्रार्थयन्ते यत्ते स्वकीयेन उद्बोधनेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद महोदयाः इमे जर्मन् पुनश्च संस्कृत उभयोर्मध्ये जर्मन् इत्यस्योपरि संस्कृतस्य प्रभावः इति विषयं स्वीकृत्य अस्मान् उद्बोधयिष्यन्ति। अतः तान् अनुरुन्धे यत् ते उपस्थाय स्वकीयं विषयं प्रस्तुतं कुर्वन्तु। हरि ओम। प्लीज अनम्यूट योर माइक। हाँ, हरि ओम। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद महोदयं। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद, प्लीज अनम्यूट योर माइक। मन्ये तत्र काचित् समस्या वर्तते खलु? डॉक्टर ईश्वर प्रसाद,
डॉक्टर ईश्वर प्रसाद अनम्यूट करो तो। संख्या सर, अस्ति हम्म, दूरवाणी संख्या अस्ति चेत् न तावत् अग्रे सारयतु। अस्तु अस्तु क्षम्यतां सर्वे मन्ये श्रोतारः भवद्भ्यः अहं साक्षात् अग्रे सारयन्तु मर्मून् महोदय। अस्तु आमन्त्रितविद्वत्सु इदानीं श्रीमन्तः मनीष ठाकुर महाभागाः अस्मान् उद्बोधनं प्रदास्यन्ति। रशियन् इति विषयं भाषां स्वीकृत्य अस्मान् उद्बोधनं प्रदास्यन्ति। अतः श्रीमन्तं मनीष ठाकुर महोदयम् आकारयामि यत् सः आगत्य अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। मनीष ठाकुर महोदय, प्लीज अनम्यूट योर माइक। Am I audible? Yes, 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 yes. इस सभा में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं विपिन जी से अनुरोध करता हूं, कृपया स्क्रीन प्रेजेंट करें। हाँ, स्लाइड। जी, हाँ, विजिबल है। जी, मेरा नाम मनीष ठाकुर है। मैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अनुवादक के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी संस्कृत के विद्वानों के बीच में मैं यह बताना चाहूँगा कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी भी नहीं हूँ, बल्कि संस्कृत प्रेमी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और मेरे एक अल्प अध्ययन के आधार पर मैं कुछ बातें रूसी भाषा और संस्कृत के विषय में बताना चाहूँगा। यहाँ मेरे प्रेजेंटेशन का विषय है रूसी भाषा में संस्कृत भाषा एवं व्याकरण से प्रभावित कुछ तत्व। नेक्स्ट प्लीज। ओके, यहाँ पे मेरे प्रेजेंटेशन का मैं सामान्य परिचय देना चाहूँगा कि रूसी भाषा, इंग्लिश में रशियन लैंग्वेज और रूसी भाषा में रुस्की इजिक, आज के रूस या पूर्वकालिक सोवियत यूनियन में प्रधानता से बोली जाने वाली भाषा है। सोवियत यूनियन के विभाजन के बाद वहाँ पे कई सारे देशों का उदय हुआ। उन सभी देशों में रूसी भाषा या रूसी भाषा से प्रभावित अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। अब मैं रूसी भाषा के भारतीय भाषाओं से, खासतौर से संस्कृत से परिचय के विषय में आता हूँ कि विभिन्न विद्वानों जैसे भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ब्लूमफील्ड, मैक्स मुलर ने रूसी भाषा को 11वीं सदी या उसके बाद के में अस्तित्व में आया हुआ ऐसा माना था। क्योंकि यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि हम तो सब जानते हैं कि संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन जिस भाषा से हम कंपेयर कर रहे हैं, सुनने वाले ये क्लियर रखें कि पहले की भाषा कौन सी है और बाद की भाषा कौन सी है। तो रूसी भाषा बहुत बाद की भाषा है, वो 11वीं सदी या उसके बाद ही अस्तित्व में आई है। यहाँ पे भारतीय संस्कृति और रूसी संस्कृति में संबंध किस प्रकार से स्थापित होता है, इसके विषय में हम कुछ बातें करना चाहेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि कई विद्वान रहे हैं जिन्होंने कहा है कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। भारतीय साहित्यकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक वोल्गा से गंगा में आर्य संस्कृति को मध्य एशिया से भारत की ओर माना है, इसीलिए वो वोल्गा से गंगा कहते हैं। जबकि मेरे मतानुसार और जबकि मैं तो क्या कहूँगा, स्वर्गीय हरिवंश लाल ओबराय ये एक विद्वान रहे हैं। इन्होंने अपने लेख में संस्कृति का प्रभाव भारत से सोवियत भूमि की ओर किस प्रकार है, इसको डिटेल में बताया है। उसके लिए मैंने यहाँ URL दिया हुआ है, उस URL में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा।
तो इन्होंने यह बताया है कि जो महाप्रलय हुआ था उस समय मनु की नाव हिमालय में रुकी हुई थी, और जबकि अन्य आर्य भारत के बाहर देशों में पलायन कर गए थे। तो उनमें से कई आर्य मध्य एशिया एवं यूरोप की तरफ बढ़े थे, और जिससे यहाँ की संस्कृति का मध्य एशिया एवं यूरोप की तरफ स्थानांतरण हुआ। और यह डॉक्टर स्वर्गीय हरिवंश लाल ओबराय ने अपने लेख में विस्तार से बताया है, जिसको पढ़ा जा सका है। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय लेखक श्री राजेंद्र ऋषि ने भी इस विषय में काफी विवेचना की है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं रूसी वर्णमाला में संस्कृत वर्णमाला के तत्व किस प्रकार से हैं। यहाँ पे मैंने रूसी वर्ण में 23 वर्णों को लिया है, जिसकी देखने में तो वो अपेरेंटली दे आर नॉट लाइक संस्कृत, बट वह ध्वनि के अनुसार बिल्कुल संस्कृत से मिलते हैं। जैसे पहला वर्ण है आ, ध्वनि संस्कृत में आ कंठस्वर है। ब, यह संस्कृत में ओष्ठ या अल्प प्राण घोष व्यंजन है। इसी प्रकार ब, व, ग, द, ई, क, ल, म, न। अंग्रेजी में ये सारे वर्ण एन, एल, एम, एच इस तरह से आते हैं, जबकि रूसी में बिल्कुल ये उसी प्रकार से आते हैं जैसे कि संस्कृत में आते हैं, क, ख, और उसी प्रकार से कंठ, ओष्ठ, मूर्धन्य वगैरह जो उनके उच्चारण पॉइंट है वहां से डायरेक्ट निकलते हैं, जैसा कि बिल्कुल संस्कृत में होता है। मैंने यहाँ 23 वर्णों का टेबुलेटेड फॉर्म में कंपैरिजन करने का प्रयास किया है। इसको देख के काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से रूसी वर्णमाला में संस्कृत वर्णमाला के तत्व समाहित हैं। नेक्स्ट। अब यहाँ मैं व्याकरण की तरफ आता हूँ। इसको मैं बहुत अधिक अध्ययन के हिसाब से नहीं बता सकता, लेकिन कोई भी साधारण रूप से रूसी पढ़ने वाला व्यक्ति इस बात को इस बात से बहुत अधिक सहमत होगा कि उसके लिए रूसी भाषा समझ पाना बहुत आसान हो जाता है अगर वो संस्कृत जानता है। क्योंकि संस्कृत में जिस प्रकार से शब्द रूप एवं धातु रूप जाते हैं, काफी हद तक उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप रूसी भाषा को समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने 2 धातुएं ली हैं, एक पठ धातु और जीव धातु। ये संस्कृत की हैं, और पठ धातु का समकक्ष रूसी में चीतात है। चीतात वर्ब है। अब हम अगर संस्कृत में कहें तो यह वहां का धातु हुआ। तो सह को संस्कृत में, रशियन में ओन कहते हैं। सा के लिए अना शब्द आता है, और ते के लिए अनि आता है। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट दोनों मैंने येलो से दिखाया है, और जिस प्रकार धातु का कंजुगेशन हुआ है, यहाँ पे पठति, वहां पे चीता एत, पठति, ओन चीतायत, अना चीतायत, अनि चीतायुत। तो यह सभी प्रथम पुरुष के वाक्य हैं। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में अगर जाते हैं तो त्वम पठसी के इक्विवेलेंट वहां पे ती चीताएश है। त्वम के लिए ती, और चीतात चेंज हो जाता है चीताएश में। इसी तरह से चीताए, चीताएश, चीताएते, चीतायु, चीताएम, ये चेंजेस उसी तरह से हो रहे हैं जैसा कि यहाँ पे पठति, पठंती, पठसी, पठथ, पठामि, पठाम। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सेम है, बट लेकिन ये कहने में भी संकोच नहीं होता है कि ये सिमिलर है। इसी प्रकार से अब देखिए, यहाँ पे जीव धातु है और रूसी में जीत धातु है। अब यहाँ पे जीव धातु जाती है सह जीवती, सा जीवती, ते जीवंती, और यहाँ होता है ओन जीव्योश, अना जीव्योत, अनि जीवोत। अब यहाँ पे उसी प्रकार से जैसे ऊपर था, यहाँ पे तो इवन उसका जो मूल शब्द है, मूल धातु है, वो भी लगभग एक ही है। दोनों का अर्थ बिल्कुल एक नहीं है,
लेकिन लगभग एक कहा जा सकता है। यहाँ जीव मतलब जीना होता है और यहाँ जीव मतलब रहना होता है। जैसे कि इसमें कहते हैं सहजीवती, मतलब वह जी रही है, जीवित है। और ओन जीव्योत, यहाँ पे अर्थ हुआ कि वह इस स्थान में रहती है। ओन जीव्योत व कानपुरे, वो ओन जीव्योत व दिल्ली, इस प्रकार से इसका परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से आप देखिए जीवसी, जीवथ, जीवामी, जीवामा, और यहाँ पे जीव्योश, जीव्योचे, जीवु, जीव्योम। तो इस प्रकार से हमने धातु की व्यवस्था देखी। अब इसके बाद हम शब्द रूप की व्यवस्था देखते हैं। संस्कृत संज्ञा छात्र और छात्रा की रूसी भाषा में स्टूडेंट और स्टूडेंट का से तुलना करते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि संस्कृत के कुछ शब्द जरूर रूसी भाषा में आए हैं, लेकिन अंग्रेजी और यूरोपियन लैंग्वेज के बहुत ही शब्द उनकी भाषा में आए हैं, क्योंकि ये वाजिब सी बात है, क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा हुआ होगा अपेक्षाकृत आर्य और रूसी लोगों के बीच में इतिहास में जिस प्रकार से हुआ होगा उससे यहाँ पे अधिक हुआ होगा, इसलिए वहां से अधिक शब्द आए हैं। लेकिन संस्कृत और रशियन का भी संस्कृत का रशियन पर किस प्रकार से प्रभाव है ये हम यहाँ देखते हैं। तो छात्रा, छात्रायाः, छात्राम, ये सीक्वेंस में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने रूसी भाषा का सीक्वेंस लिया है, इसलिए यहाँ पे संस्कृत का प्रथम पुरुष प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति इस प्रकार से नहीं है, जबकि रशियन का नॉमिनेटिव, जेनेटिव, डेटिव, एक्यूजेटिव, इंस्ट्रूमेंटिव, प्रीपोजिटिव केसेस के बारे में यहाँ पे हमने बताया है। तो देखिए छात्रः, छात्रः शब्द है, यहाँ पे स्टूडेंट शब्द है। नॉमिनेटिव केस में सेम रहेगा, छात्रा, यहाँ पे स्टूडेंटी, छात्रा मतलब प्लूरल में स्टूडेंटी हो जाता है। तो छात्रायाः मतलब कि षष्ठी विभक्ति, जो कि यहाँ पे स्टूडेंटा हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए अलग अलग केसेस में केवल अंत में अंतर आता है। जैसे संस्कृत में छात्र शब्द के अंतिम भाग को बदला गया है, उसी तरह यहाँ पे कंजुगेशन है, स्टूडेंटू, स्टूडेंटा, स्टूडेंटोम, स्टूडेंटे, स्टूडेंटम, स्टूडेंटम। इसी प्रकार दूसरा शब्द आता है छात्रा, छात्रा रशियन में स्टूडेंट का, स्टूडेंट का जिसका बहुवचन होता है स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट की के लिए यहाँ पे जेनेटिव केस में छात्रा या स्टूडेंट की, छात्राणाम, स्टूडेंट। इसी प्रकार से अंत के अक्षर प्रत्यय लगाकर इस प्रकार से उस शब्द बनाए गए हैं, जैसा निर्माण हमें संस्कृत में भी दिखाई देता है। आगे बढ़ो। यहाँ पे मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ जी। हाँ, यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल के साथ मैंने षष्ठी विभक्ति को जोड़ के किस प्रकार से शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। और उसके साथ मैं एक दो शब्दों से भी परिचय कराऊंगा जो कि बिल्कुल संस्कृत से ही लिए गए जान पड़ते हैं। जैसे कि भ्राता, रूसी भाषा में ब्रात होता है। माता, रूसी भाषा में मात होता है। और अब देखिए सह मित्र ओन द्रुग, सह भ्राता ओन ब्रात, सा भगनी अनासिस्त्रा। और ये तो नॉमिनेटिव केस में हो गया, लेकिन जब हम जेनेटिव केस यानी षष्ठी विभक्ति में लाते हैं तो देखिएगा शब्द संस्कृत में किस प्रकार से बनते हैं और रूसी में किस प्रकार से बनते हैं। संस्कृत में हम कहते हैं मित्रः भ्रातस्य, तो मित्र यहाँ पे द्रुग है, अब भ्रातस्य यहाँ पे ब्रात बदल गया ब्राता में। और इसी प्रकार से मित्र भगिन्याः द्रुग स्त्री, शक्ति मातुः शीला माचेरी, उच्चारण कहते हैं माचेरी। इसी प्रकार शिक्षकः भौतिक विज्ञानस्य उचितेल फिजिकी। तो इसमें जो नॉमिनेटिव पे ठीक है, अगला आ गया ना। अब यहाँ अंक व्यवस्था की बात करते हैं। संस्कृत में द्वौ, रूसी भाषा में द्वा, संस्कृत में त्रय, रूसी भाषा में त्रि, चत्वारः चित्री,
षष्ठ शेष्ठ, द्विशतानि द्विशोतनी, त्रिशतानि त्रिशोतनी, षष्ठ शतानि शेष्ठ शोतेन। तो जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, यहाँ सेम नहीं बल्कि सिमिलर शब्द इसके लिए उपयोग करेंगे, लेकिन ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जरूर ये सारे शब्द संस्कृत से ही लिए गए हैं। और दो संस्कृतियों के बीच में जब समागम हुआ, दो संस्कृतियां आपस में मिली, उन्होंने भाषाओं का आदान प्रदान किया, लेकिन क्योंकि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, उससे रूसी भाषा ने सीखा है और ये सारे शब्द उससे ही इसमें आए हैं। इसी प्रकार देखिए कुछ अन्य मिलते जुलते शब्द बताना चाहूंगा। नभः नीव, अग्नि अगौन। अब हम हिंदी में लेते हैं, हिंदी में अग्नि बोलते हैं, आग बोलते हैं, अगन भी बोल देते हैं। अब वहां अगन बोलते हैं, यहाँ अगौन बोलते हैं। यहाँ नभः बोलते हैं, यहाँ नीव बोलते हैं। तृतीय बालिका तृतीया जीवोचका, तृतीय तृतीया। षष्ठतमी बालिका श्रेष्ठतया जीवोचका। अब यहाँ पे अभी हमारे गुरुजी ने अंग्रेजी और संस्कृत के बीच में कुछ संबंध स्थापित करने का प्रयास जैसा उन्होंने बताया था। मेरी समझ से उसमें जितने तत्व संस्कृत के लिए गए उससे कहीं ज्यादा शब्द तत्व रूसी भाषा में दिखाई देते हैं। यहाँ समय का भी अभाव है और मेरा ज्ञान भी उसी प्रकार से सीमित है, तो मैं उतना नहीं बता सका और कुछ अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी गुरुजनों को प्रणाम के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवादः ठाकुर महोदयाय। बहु सम्यक्तया भवद्भिः उपस्थापितः स्वविषयः। ध्वनिसाम्यतायाः एतावत् समीपस्थम् उदाहरणं भवता उपस्थापितं। निश्चप्रचं इदं व्याख्यानम् अस्माकं कृते उपयोगी ज्ञानवर्धकं च अस्ति। अतः परम् अहम् ईश्वर प्रसाद महोदयं एकनिमेषात्मकं प्रथमम् अरेबिक भाषा, तदनन्तरम् अन्ते ईश्वर महोदयस्य। अस्तु। अरेबिक भाषा सन्दर्भे संजीव ठाकुर महोदयस्य मन्ये 15 निमेषात्मकम् एकं वीडियो क्लिप् अस्ति, परं वयं तस्य ये उपयोगी अंशाः सन्ति तेषामेव श्रवणं कुर्मः, यतोहि समयः अतिक्रान्तः वर्तते। अतः वयं एकनिमेष अथवा निमेषद्वयमेव केवलं यत् ये उपयोगी अंशाः सन्ति तेषामेव श्रवणं कुर्मः। इदानीं भवतां पुरतः हम प्रेजेंटेशन दे लिए, आप इनका संजीव इनका प्रोजेक्ट अरेबिक और संस्कृत के बीच में। Sanjeev Thakur with you. I am from a very lower middle class background. I am a supply and chain management professional. I started my career in 1993 when I finished my graduation from LNMU Darbhanga. Thereafter, consistently, I am serving my duties somewhere. During my career, I got opportunity to serve more than 12 prominent organizations across India or Gulf countries abroad as well. Mr. Bipin Jha, who is a very graceful person, has given me an opportunity to express my opinions about the cultural and the language diversity between India and the Arabic world. Arabic, a language that has passed the test of time, remains one of the oldest and most unique languages in the world. According to Ethnologue, almost 600 million people speak the language. Most native English speakers consider it a language with a foreign alphabet and unrecognizable speech patterns. However, those that take Arabic at BSU know it as a beautiful flowing language that offers a glimpse into the past. Most Arab peoples
resides in the Middle East and North Africa, while the majority of Indian peoples lives in South Asia in India. The majority of Indian peoples practice Hinduism, while the majority of Arab practice Islam. Arabic, the predominant language in the Arab world, is an Afro-Asiatic Semitic language, while Hindi and many of the Indian minority languages are part of the Indo-Aryan language family. How similar are Arabic and Sanskrit structurally? Not even close. For just example, classical Arabic, classical Arabic, which I am assuming would be the version you would use, since making them all look like Arabic sentence would work. Maybe someone who is more familiar with Sanskrit than I am could correct me here. Classical Arabic doesn't use a copula in the present. Sanskrit, I am pretty sure, does. The definite article plays a huge role in Arabic grammar. Sanskrit doesn't even have one. These just are a few things that occur to me off the top of my head, but I am guessing in almost every dimensions of grammar you can think of, the two languages aren't similar as always. अस्माभिः महोदयस्य यद् वीडियो क्लिप् आसीत् तत् श्रुतं। मन्ये डॉक्टर ईश्वरप्रसाद महोदय उपस्थितः अस्ति किम्? ईश्वरप्रसाद महाभागाः अस्माकं पुरतः उपस्थिताः सन्ति? अस्तु अस्तु, सन्ति, मन्ये दृश्यते, तेषां चित्रं दृश्यते। अतः तान् अनुरुन्धे यत् ते अल्पेन समयेन स्वकीयं व्याख्यानं प्रदाय अस्मान् अनुगृह्णन्तु। सर्वेषां नमस्कारः। वक्तुम् उपस्थितः अस्मि। So here first I would thank for the opportunity which is being given to me to present on this topic about what I know about to the learner August audience. So German language, it is having very much similarity with the Sanskrit language in some of the aspects such as gender, then gender identification, and also in case of the vibhaktis. So Sanskrit language, as we know, it is the oldest available literary language of the world, and in India, Sanskrit became the medium of instruction for thousands of years till the arrival of the British education. So all of us know it. But after colonization, people from different parts of the world, they started learning and translating Sanskrit texts into their language. One such language is the German language. The discovery of Sanskrit language by Europeans after colonization starts at the end of the 18th century. It was the starting point from which developed the study of comparative philosophy of Indian as well European languages that all of us know. Sanskrit, which is the mother language, is closely related to the old German language also. So as we know, the Aryan invasion theory and so many other theories, Indo-European language. So based on this, I think the discussion it had already happened, so I am not going to repeat again. So here in each noun in Sanskrit and German has its own gender. For example, one example I will give, that Nadi, which means the river, it is a feminine in Sanskrit, that is Strilinga in Sanskrit. And touch in Sanskrit, we know Syutah or Syutam. So these are some of the similarities as we have for the gender differences. Then these things. Then both are phonetic languages. That is, whatever we write, we pronounce the same.
So writing and pronunciation is same, unlike in the English. In English, there are some changes. We know we don't know why it is silent in some of the words. Doubt we speak, but why B is there, we don't know. But in Sanskrita and in German, it is not like that. It will be pronounced what is being written. So German words are gender based, and part of a word changes with gender and position. That may be the first person, second person, or third person of the subject. This is same as in Sanskrita. So in there are some articles such as die, des, der, which is being used for the noun, and these are also as like the in Sanskrita we have the pronouns for saha gachati or sa balika or tat vanam. Is in that way here also der, des, di articles are also being used. Then vibhakti pratyaya is there are some this prasnepadi pratyaya, atmanepadi pratyaya, which distinguishes a word for particular subject from form is also used in a sentence. There are 7 cases in Sanskrita we know vibhaktis, but in German we have the 4 cases vibhaktis, that is nominative, accusative, dative, and genitive. But in Sanskrita we have from the nominative, accusative, instrumental, dative, ablative, then genitive, locative. But here only 4 are there in German language. So that is nothing but the Prathama Vibhakti, Ditya, Tritiya, Chaturthi, Panchami, Shashti, Saptami Vibhaktis. So however, they have a fundamental difference is the typology, that is typography, that is Sanskrit uses Devanagari text, whereas German is similar to the English like Latin. Then there is a great affinity for Indian mythology, literature, and philosophy, which can be traced back to the country's interest in Sanskrita. So several German philosophers, scholars, and even politicians have been inspired by the works and ideas originating from India. Then Germany had a special affinity for the Indian literature. You can see it since 17th century, that is in 1620, by Heinrich Roth. So he was the first German scholar of Sanskrita, because they were very much influenced by the Indian literature. Then a philosopher and Indologist, that is Friedrich von Schlegel. So he also published an epoch-making book, that is Über die Sprache und Wesen der Indien, on the language and wisdom of India. So even we have then other writers such as Gottfried von Herder, then Max Muller. Max Muller is famous, who had already published the Sacred Books of the East, 49 volumes of which appeared between 1874 and 1884. So a German living in Britain was the first to translate the Rig Veda, the Max Muller. Then Sanskrita literature translated to German, we can see the famous Kalidasa's Shakuntalam, Abhijnana Shakuntalam, Kavyeshu. That Shakuntala is very much famous, and it was translated by John Wolfgang von Goethe, a German poet dramatist who translated it to German. Then we have many other persons and even Germans attracted by the Sanskrit text. Mainly they find the Sanskrit text is having a unity. So that may be one of the reasons why they are being so much attracted. And the language has enjoyed great revival in the country, with the 14 universities teaching Sanskrit, especially in Germany. And also around 1,200 schools are said to have teaching Sanskrit there. So they have great affinity for the Sanskrit. But Sanskrit is the language of scholars and not the poets. This is the main concept what we can see there. We don't know the level of Sanskrit they are teaching, but this is they consider it as a language of the scholars and poets, and not as a language. Initially, Sanskrit had scientific, religious, and poetry well established, and it was required for the elite to exchange the ideas. So this is taught for linguistic research purpose, but not to adopt the Sanskrit as a language in Germany. So that is one point that we can note. Then Sanskrit in Germany is solely for the linguistic research purpose. Then Professor Dr. Axel Michaels, head of the classical Indology, he mentions, he quotes as
I have found his quote in Mail Today, that is a significant part of the global cultural heritage will become extinct if major languages such as Hindi or Bangla fall prey to the Indian English. So our Indians affinity to the English, they are worrying rather than our Indian people. So which in the process has only got poorer, he added. So then while coming to the phonetics of the German language has 26 letters as in English, but their pronunciation are different. Letters are completely different from the Sanskrit Devanagari script, and there are 3 umlaut letters also. So this is the phonetic what we can see there. German language has a character called that is SZ, that is double S. So they also use the 3 umlaut. Umlaut means this one, here 2 dots above A, O and U. So that is called as the umlaut. That is the extra letter what we can see than the English letters. It is pronounced as A, O, U, Max Miller. So here Max Miller, it is MUE is not so suitable rather than umlaut, like the umlaut. That is how it is being used. So when used in words, it sounds exactly as the S, which one? This double S. So these are some special characteristics what we can see there in German languages, and Sanskrit revival is the accumulation of attempts to reviving Samskrita that have been undertaken, and this words are here. So, and one quote I wanted to make from this is here in Mail Today, that is Samskrita. It is 14 universities are teaching India's this actually Samskrita, and it is a report from in our one of the newspaper. That is what I just try to display here. So this is what their contribution given for the Germans contribution for the Samskrita, or how they looked at Samskrita. Then even some of the universities, they are having the MOU with our Indian Samskrita universities. It is also being observed. So this is how they looked. What we can expect from this is Indians have to give more attention to Sanskrita, because when the foreign people are attracted to this language, so our role is more, because our people are lagging behind in learning it. Of course, as far as our heritage and the tradition, when it is being compared to the Western people, so the number of people learning the Sanskrita is less in India. We have 130 crore people. So we should understand our own heritage, and we should include it in our day-to-day life, or either it may be in the schools or in the colleges, because that heritage is to be used when foreigners are looking into it. So this is what I observed while comparing with the German language with the Sanskrit language. So I thank the organizers of this, especially to Dr. Bipin Kumar Jha, for giving this opportunity to share some of my views about German language as well this Samskrita Bhasha. Thank you for this opportunity to share my views. धन्यवादः महोदयः। मन्ये अद्यतनं सर्वेषां वक्तॄणां व्याख्यानम् अत्यन्तं शोधपरकं सान्दर्भिकं ज्ञानवर्धकं च आसीत्।
इदानीं क्रमः वर्तते धन्यवादज्ञापनस्य। अतः धन्यवादज्ञापनाय अहं शुक्ल महोदयं निवेदयामि यत् सः उपस्थाय अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य वक्तॄणां क्रमशः धन्यवादज्ञापनं कार्तज्ञ अर्पणं च करोतु। आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्ते। विश्व संस्कृत सप्ताह पर्व के अवसर पर आयोजित विश्व प्रतिनिधि भाषाओं में संस्कृत वैभव इस विषय पर महर्षि पाणिनीय संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ जाह्नवी ई शोध पत्रिका इनके संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि सारस्वत अतिथि एवं सभी विद्वज्जन के धन्यवाद प्रकट करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। पिछले 1 घंटों से हम सभी ज्ञान धारक के रूप में उपस्थित हैं। इसका प्रमुख कारण हमारे कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि सारस्वत अतिथि एवं मुख्य वक्ता के ज्ञानवर्धक शब्दों ने हमें अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। आदरणीय सर, आपके प्रभावशाली शब्दों से हमें प्रेरणा मिली है। आपके शोधपरक एवं सारगर्भित व्याख्यान ने हम सभी का ज्ञानवर्धन किया है। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में सरलता, सज्जनता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय डॉक्टर सुमन के.एस. महोदय HOD संस्कृत लोयोला कॉलेज चेन्नई से मैं उनका अपनी ओर से तथा महर्षि पाणिनी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ और जाह्नवी ई शोध पत्रिका तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। इसी क्रम में आज के कार्यक्रम में सारस्वतातिथि के रूप में उपस्थित माननीय डॉक्टर प्रशांत केले महोदय HOD संस्कृत रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज मलयपुर, जिन्होंने अपने सारगर्भित व्याख्यान में तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा के महत्व को हम सभी के समक्ष प्रकट किया। उनके व्याख्यान से हमें अत्यंत ही अधिक ज्ञानवर्धक प्रेरणाएं प्राप्त हुई हैं। मैं उनका अपनी ओर से तथा महर्षि पाणिनी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ और जाह्नवी ई शोध पत्रिका तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। मुख्य वक्ताओं में मैं श्री मनीष ठाकुर महोदय, जिन्होंने अपने व्याख्यान में रूसियन एवं संस्कृत भाषा के संबंध को सारगर्भित रूप से प्रस्तुत किया है, मैं उनका भी अपनी ओर से तथा महर्षि पाणिनी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ और जाह्नवी ई शोध पत्रिका तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। इसके उपरांत श्री संजीव ठाकुर महोदय, जिन्होंने चलचित्र के माध्यम से अरबिक और संस्कृत भाषा के संबंध को बताया, मैं उनका भी अपनी ओर से तथा महर्षि पाणिनी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ और जाह्नवी ई शोध पत्रिका एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। मुख्य वक्ता के रूप में इसी क्रम में डॉक्टर ईश्वर प्रसाद महोदय, जिन्होंने जर्मन और संस्कृत भाषा के संबंध को अपने प्रभावशाली शब्दों से हमें ज्ञानवर्धन स्पष्टीकरण का व्याख्यान देकर प्रकाश किया है, मैं उनका भी अपनी ओर से तथा महर्षि पाणिनी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ और जाह्नवी ई शोध पत्रिका का कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। कार्यक्रम के संरक्षक प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी, माननीय कुलपति महर्षि पाणिनी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय, मैं उनका भी अपनी ओर से एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। कार्यक्रम के समन्वयक महोदय डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदया, शिक्षण प्रमुख संस्कृत भारती महेंद्रगढ़, संस्थापक एवं संपादक जाह्नवी संस्कृत ई जर्नल, उनका भी मैं अपनी ओर से तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव, डॉक्टर मदन मोहन तिवारी, डॉक्टर रवि कुमार शास्त्री जी एवं सहायक रिपु दमन पंडित, शिल्पी गुप्ता एवं कार्यक्रम में सहायक अन्य विद्वत कार्यकर्तागण, सभी का मैं
अपनी ओर से तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज के कार्यक्रम के संचालनकर्ता डॉक्टर मदन मोहन तिवारी महोदय एवं मंगलाचरण जिन्होंने मंगलाकृत्य कर कार्यक्रम की शुरुआत की, सुश्री रजनी महोदया, उनका भी मैं अपनी ओर से तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। अंत में 2 पंक्तियों को बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। खुशियों भरी इस संगोष्ठी में आज अपनेपन का एहसास हुआ। खुशियों भरी इस संगोष्ठी में आज अपनेपन का एहसास हुआ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ। धन्यवाद। माइक अनम्यूट कर लेते हैं। धन्यवाद कर्त्री आशीषाय बहुशः धन्यवादाः समर्पयन्ते यतोहि भवता बहु सम्यक्तया धन्यवाद ज्ञापनस्य दायित्वं निर्वहणं कृतवान् अस्ति, अतः भवतेपि बहुशः धन्यवादाः समर्पयन्ति। इदानीं शान्तिमन्त्रेण अस्य कार्यक्रमस्य सम्पूर्ति भविष्यति। पुनः श्वः यथा समये भवन्तः सर्वेपि उपस्थिताः भविष्यन्ति इति निवेदनमस्ति। शान्तिमन्त्रं कुर्मः स्वस्वस्थानात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु, नमो नमः। श्वः पुनः यथा समये लिङ्क् ग्रूप् मध्ये समयेन प्रेषणं भवति, यतः सर्वे उपस्थिताः भवन्तु इति निवेदनं वर्तते। सर्वेभ्यो नमो नमः।